Hello engineering aspirants, welcome to our new module ICCP. ICCP stands for Impressed Current Cathodic Protection. ICCP stands for Impressed Current Cathodic Protection. Impressed Current Cathodic Protection. Clear? So what is impressed current cathodic protection and how whole system mechanism is working, सारी थिंग्स पे बात करेंगे. So before going to ICCP, let's talk about some basics metallic properties. Yes, अगर जब तक वो मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं समझोगे, nobody will going to understand this ICCP mechanism and majority of students वही गलतियां करते हैं. Now see, this is your ship. Assume this is your ship. Starboard side. Clear? Starboard side view. Now this ship जो है, this one is your which one? Water line. Water line of the ship. Water line. Now the ship is being formed by joining too many different metals. Too many different metals. तो जो शिप्स की जो आउटर पार्ट है, हल है, वो क्या है? टू डिफरेंट मेटल्स से बनी हुई है. सो शिप इज बीइंग फॉर्म्ड बाय डिफरेंट मेटल्स. क्लियर? सो सपोज मैं टू डिफरेंट मेटल्स यहां पर एज्यूम करता हूं. दिस इज मेटल ए एंड दिस वन इज मेटल बी. क्लियर? Likewise, the ship is being formed by joining different metals. Clear? हल क्या है? डिफरेंट मेटल्स से बना है और वो ज्वाइन हो रहा है थ्रू वेल्डिंग. So we can say these two dissimilar metals joined together by welding process. Clear? यही होता है ना, शिप्स तो ऐसे ही बनता है ना, शिप्स हल मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल. सपोज आई एम एज्यूमिंग आवर वन मेटल इज प्योर आयरन एंड अदर मेटल इज आयरन प्लस एलोए. एलोए क्या हो सकता है? इट मे बी दिस मेटल इज एलोए ऑफ आयरन प्लस स्टेनलेस स्टील प्लस एल्यूमिनियम एलोए. क्लियर? इस तरह का. तो नाउ this pure iron, just assume this pure iron having more positive charge. This pure iron having more positive charge, that is more positive charge. And this iron plus alloy. See, these two metals are two different dissimilar metal, right? This is pure iron metal and this one is iron plus alloy metal. Clear? Having lesser positive charge. So pure iron having greater positive charge as compared to iron plus alloy, and this iron plus alloy having lesser positive charge as compared to this pure iron. Clear or not? Any doubt? Now as per chemistry metal composition, suppose this is your, इसकी मैं लार्जर व्यू बना रहा हूं. ठीक है? सपोज दिस इज योर टू डिफरेंट मेटल. क्लियर? दिस वन इज प्योर आयरन and this one is iron plus other alloy. So pure iron having greater positive charge as compared to iron plus alloy. Clear? Now this pure iron metal act as a positive plate, act as a positive plate, and this iron plus alloy metal act as
act as a negative plate with reference to pure iron plate. With reference to pure iron plate. See, SiP is being formed by different joining metals together. So काफी सारे different metals से बना होता है SiP cell. Now मैंने दो different metals, एक छोटी सी व्यू आपको यहां पर दिखाया है. So suppose if iron plus alloy, if two dissimilar metals are joined together, and I am assuming pure iron having more positive charge, and I am assuming your iron plus alloy is having lesser negative charge, then your pure iron which is having greater positive charge is act as a positive plate, and iron plus alloy which is lesser positive charge is act as a negative plate with reference to this pure iron. Although ये पॉजिटिव चार्ज है, although this iron plus alloy is having some positive charge, but this positive charge is much lesser positive charge as compared to this pure iron positive charge. क्लियर? इसकी भी पॉजिटिव चार्ज है, बट पॉजिटिव चार्ज प्योर आयरन के कंपेयर में लेसर है. तो मैं बोलूंगा कि ये आयरन प्लस दिस आयरन प्लस एलॉय क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज में लैग कर रहा है प्योर आयरन के कंपेयर में. सो टेक दिस आयरन प्लस एलॉय, टेक एज अ नेगेटिव प्लेट, एंड दिस इज लुक्स लाइक अ कैपेसिटर. सो इफ एनी टू डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर, if any two dissimilar metal means one metals having greater positive charge and one metal having lesser positive charge, and if two dissimilar metals join together, then there some voltage gradient is formed in between them. तो यहां पर क्या हो रहा है? voltage gradient plus and minus means what? This is nothing but some voltage gradient, plus and minus, getting or not? तो some voltage gradient यहां फॉर्म हो रहा है. So this is called nothing but this is your voltage gradient. इस पार्ट को मैं बोलूंगा voltage gradient. Clear? Any doubt? This is nothing but your voltage gradient. Clear? Now see, इतनी समझ में आ गई. Now अब ये जो SiP जो है बिलो वाटर लाइन, अब यहां पर क्या होगा? वाटर होगा. सी वाटर इज प्रेजेंट हियर. गेटिंग और नॉट? दिस इज सी वाटर. सो सी वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ दिस टू मेटल जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया है. सी वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ दिस टू मेटल. क्लियर? नाउ लुक, this pure iron which is having greater positive charge is act as a positive plate, and this iron plus alloy which is having lesser positive charge as compared to your pure iron is act as a negative plate, and in between these two, in between positive and negative, there is what? साल्ट वाटर. तो ये क्या आ गया? साल्ट वाटर. क्लियर? सो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस इज एक्ट एज अ वोल्टेज ग्रेडियंट एंड साल्ट वाटर इज देयर. क्लियर? मीन्स सम सप्लाई वोल्टेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स. क्लियर? मीन्स सम सप्लाई वोल्टेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू प्लेट. सो now this mechanism is called electrolysis. This mechanism is called electrolysis. Clear? In further lectures we will going to discuss about how rusting takes place on your ship's hull. अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से रस्टिंग कैसे हो रहा है उस पे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे. क्लियर? आई होप इतनी आपको समझ में आ गई होगी. सी SiP is being formed by different metals joining together, and I am assuming these two dissimilar metal, one is your pure iron and other one is your iron plus alloy metal. Pure iron having
greater charge, greater positive charge, and your iron plus alloy having lesser negative charge. So greater positive charge metal act as a positive plate and lesser positive charge plate is act as a negative plate. Clear? And in between these two plate, between these two plate there is salt water. And second thing is this positive plate and negative plate looks like a capacitor. So there is some voltage gradient in between them. And apart from voltage gradient, there is some salt water is present in between these two. There is some salt water or sea water is present in between these two. Clear? क्योंकि ये sea water जो है ये वाटर लाइन के बिलो है ना ये मेटल, तो कुछ तो वाटर कॉन्टैक्ट है. तो बिकॉज ऑफ some voltage gradient in between these two plate and salt water, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एंड हाउ रस्टिंग टेक्स प्लेस ऑन योर ship cell, that we will discuss in our next lectures. Stay tuned for further more lectures. Thank you.